समस्त को नमस्कार पिलाने। आज आम डे 3 रे आसिक पहुँचले। प्रथम दिन द्वितीय दिन जो मैंने देखी न देखीदि। प्रथम दिन मुझे कौन कौन पढ़े थोड़े आखि पकईदे। ये हूँ डे 1। डे 1 ने मुझे पढ़े केमी गुड मॉर्निंग कह कौ समय कह हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू व्हाट इज योर नेम माय नेम इज। तापर मुझे पढ़ेली कैन यू हेल्प मी। आपर आम देखिले व्हेयर इज द बाथरूम और वाशरूम आई डोंट अंडरस्टैंड प्लीज स्पीक स्लोली हैव ए नाइस डे। सेमती डे 2 रे भी मु गुड़ाए जिनस कहली। एबे आम डे 3 रे किछि डेली यूज सेंटेंस देखिबा जोटा कि तुमको इंग्लिश कहिबारे साहाय्य करिवो। ये वीडियोटा कंप्लीट नुह कि सबू किछि नुह जे तुम ये गोटे वीडियो देखीदेले ही शिखिजिवो, किंतु ए वीडियो तुम किछि ज्ञान पाइबो जहाकू कि नहीं कि तुम तुम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करिपरिवो। देख प्रथम सेंटेंस हूँ कैन आई हैव सम वाटर। मते किछि पानी मिल पारिबो कि। तमे धर स्कूल को जाउज तमर बोतल रु पानी सरी जाइछि आ गोटे सांग पिला पानी मागुच ताकू केमती इंग्लिश रे मागिबो कैन आई हैव सम वाटर। मते किछि पानी मिल पारिबो कि। जदि गोटे वयस्क लोक होइथिबो ताकू कौन प्लीज लगे कहबो प्लीज कैन आई हैव सम वाटर और कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। बुझिपारछ तो प्लीज को आगे भी लगे पारिबो पछरे भी लगे पारिबो। तो मते किछि पानी मिल पारिबो कि एटा बहुत जगह तुम कहि पारिबो। जेमति होटल को जाउछ होटल रे बइछ जेती समय भितर खाइबाटा आसीबो तुम धर शोष कला पानी पीवा कहूच तो सेठी ए शब्दर व्यवहार कर पारिबो। तापरे आई एम सॉरी माने मु दुखित। देख आर कौट कौन व्यवहार करियो प्रायतः जगह मु खाली तुमको 2-3 टा एग्जांपल दउछि। जेमती आई एम सॉरी कौट कौट व्यवहार करियो जदि तुमर भूल हो गला कौट कौन धर स्कूल रे भूल हो गला सार को सॉरी मागुछ आई एम सॉरी कहले तो हेनी सेठी सार लगेबो आई एम सॉरी सार सार लगेबो कि जदि मैडम है मैडम लगेबो। बुझिपारछ ए सब किंबा कौन किसी भूल करदेल सेठी कहबो आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी मते क्षमा करिवे। धर तमे ठिया होइछ गोटे टीवी कि कौन गोटे प्रोग्राम देखुछ तुम आगे आउ गोटे लोक ठिया हो सी जानी जहाँद्वारा कि तुमको से आग जिनसटा देखा जाऊनी तुम चाहूच देखिए ताकू केमती कहबो जे हटि जाए बोली ताकू कहबो जे सेपट ठिया ताकू खराब लगे। इंग्लीशटा मु सब बेले कहिछि कहार लैंग्वेज इंग्लीशटा सब गोटे जेंटलमैन लैंग्वेज। आ माने कौन तुमको भल मैनर व्यवहार करिक इंग्लीश कहया पड़ो। जेमती तुम आगे जने ठिया ताको हटेगा चाहूँ कौन कहबो एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी माने दयाकोरी क्षमा करिवे मो आगुरी टिके अटन हटि जातु। बुझिपारछ एक्सक्यूज मी कहीदेले से लोक बुझीपार। किंबा आउरी बहुत जगार अच्छी जो तुम एक्सक्यूज मी धर तुम गोटे अजना लोक कि गोटे पचार जाऊच ताकू कौन कहबो एक्सक्यूज मी प्लीज। बुझिपारछ तुम गोटे पचार चाहूच जे तुम गोटे गाँ भीतर को जाऊच से गाँव रे रास्ता चलती रास्तार तुम गोटे जगह जावाक चाहूच किंतु से जगार पहुँची पारुन तो तुम गोटे लोक पचारुच जे यही गाँटा कौटी अच्छी तुम से कौन कहबो तो जोटी तुम रहिबो पचारिया को जे कौ गाँटा कि कौ जगार रही से तुम यहाँ व्यवहार कर एक्सक्यूज मी सर यहाँ कौ पटे बाट। बुझिपारछ व्हाट आर यू डूइंग माने तुम कौन करुछ एटा बहुत जगह व्यवहार बहुत जगह व्यवहार कर। व्हाट आर यू डूइंग तुम गोटे लोक पचार चाहूँ कौन कर कि कौन चली से व्यवहार कर व्हाट आर यू डूइंग माने तुम कौन करुछ। प्लीज सिट डाउन दयाकोरी बसी पड़तु दयाकोरी सेठी बसंतु किसी गोटे कहबो धर तुम घर को जड़े किए आछंती गेस्ट आछंती किए आछंती गेस्ट गेस्ट माने कि कुणिया आछंती तुम कौन कौच गोटे चेयर टे दब बसिया कहबो कि तुम घर को सार आछंती तुम कौन कहबो सार प्लीज
ଏଇ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଦୟାକରି ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ 5ଟା ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଯେମିତି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛ ଏ ଚାଇଲୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ସପ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ସପ୍। ତ ସେମିତି ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ନାଁଟା କହିବ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଧର ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ରାହୁଲ୍ସ ହାଉସ୍। ଧର ତମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ରାହୁଲ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ରାହୁଲ୍ସ ହାଉସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ରାହୁଲର ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି କହିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଧର ତମେ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନକୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣୁଛ, ତୁମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ସେଇ କଥାଟା କହିପାରିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଇଛି, ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କହିପାରିବ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେମିତି ତମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିପାରିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି କହିପାରିବ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଆଉ ସେଠି ତା ନାଁଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, ମାନେ କ'ଣ? ତମକୁ ଧର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗେ, ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଧର କ'ଣ, ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ କହିବ? ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବାହୁବଳୀ ମୁଭି। ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡୋଣ୍ଟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଠିକ୍ ସେ ଦେଖ, ଡୋଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି, ମୁଁ ଏ ମୁଭିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତମକୁ ଧର ଜଣେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛି, ଏ ନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖା, ତମେ କହିପାରିବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଚାଲ ଯିବା ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଓକେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଟ୍ସ ଓକେର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଧର ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ? କିମ୍ବା ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିପାରିବ। ଧର କିଏ ଗୋଟେ ପଇସା, ତମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ରଖ କି 200 ଟଙ୍କା ରଖ, ତମେ ସେଠି ମନା କରିପାରିବ, କହିବ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମାନେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ସି ୟୁ ଲେଟର୍ ମାନେ ପରେ ଦେଖା ହେବା। ପରେ କେମିତି ଦେଖା ହେବା? ଧର ତମେ ଏଇକା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ, ତମର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ସେ ଲୋକଟାକୁ କହିଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଲେଟର୍, ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରେ କେହି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତିନି, ତଥାପି ଗଲାବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ସି ୟୁ ଲେଟର୍, ଯେ ପରେ ଦେଖା ହେବା। କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ତା ନମ୍ବର ଆଣିଲ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସି ୟୁ ଲେଟର୍, ଯେ ପରେ ଦେଖା ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିସହିତ ଆମର ଡେ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଡେ 4 ଦେଖିବା। ଡେ 4ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି କି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, ଆକୁ ଲେଖିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଯିବ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି କ'ଣ ତୁମକୁ? ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ତୁମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଇଂଲିଶ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ଲେଖୁଛ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।